Hello people, I'm going to cover unit 7th of class 12th in CRT bio. So the name of this unit is genetic and evolution, and this is consist of a three chapter, which is principle of inheritance and variation. Chapter 6 is molecular basis of inheritance and 7th is evolution. So I'm going to cover the first chapter, which is chapter 5, principle of inheritance and variation. So I will record all the important points of this chapter. So in first page of this chapter, the important point is inheritance is the process by which character are passed from parents to progeny. इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है जिससे कैरेक्टर जो होता है वो पास होता है पेरेंट टू प्रोजेनी, और इनहेरिटेंस ही बेसिस होता है हेरिडिटी का. So this can be asked in your question that what is the basis of heredity? So answer would be inheritance. And what is variation? So variation is the degree by which progeny different from their parents. यानी कि जो progeny है वो parents से कितना differ करता है उससे बोलते हैं variation. Now the next point is Mendel's law of inheritance. So Mendel ने experiment किया था from year 1856 to 1863, and this is the first time where someone has used statistical analysis and mathematical logic. तो biology में mainly ये use नहीं होता था, and this was the first time Mendel has used this thing. And during his experiment he has choose 7 pair of contrasting trait इन पी प्लांट. सो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया था? पी प्लांट पे. और कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे? वो थे 7. और किस ईयर में किया था? वो था 1856 to 1863. सो नीट में मेनली यही आता है कि वो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर क्या थे. तो आपको सिंपली ये याद करना है कि अगर हम सीड का देखते हैं तो उसका शेप और उसका कलर. ओके, तो शेप में डोमिनेंट था राउंड और रिसेसिव था रिंकल्ड. और कलर का देखेंगे तो येलो जो कलर था वो सीड का कलर डोमिनेंट था. सो सीड कलर डोमिनेंट में येलो, और जो रिसेसिव था वो ग्रीन था. एंड फ्लावर में था तो फ्लावर का भी कलर था और उसकी पोजीशन थी. तो डोमिनेंट था वाज वायलेट एंड रिसेसिव वन वाज वाइट. एंड फ्लावर की पोजीशन डोमिनेंट थी एक्सियल एंड रिसेसिव थी टर्मिनल. नाउ द फिफ्थ वन इज पॉड के बारे में. पॉड का शेप और पॉड की कलर. डोमिनेंट था फुल और रिसेसिव था कॉन्स्ट्रक्टेड. एंड पॉड का कलर डोमिनेंट था ग्रीन और रिसेसिव था येलो. इसमें एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि पॉड का कलर और सीड का कलर आपको अच्छे से याद करना है. पॉड के कलर में डोमिनेंट ग्रीन होगा, रिसेसिव येलो होगा, एंड इसका अपोजिट हो जाता है सीड का कलर. सीड का कलर में येलो डोमिनेंट हो जाता है और ग्रीन रिसेसिव हो जाता है. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड सेवन थिंग वाज स्टेम की हाइट. टॉल वाज डोमिनेंट एंड डार्क वाज रिसेसिव. सो लेट्स रिवाइज द थिंग्स. सीड में सीड का कलर और सीड का शेप. पहले जो बोलूँगी वो डोमिनेंट होगा, बाद वाला रिसेसिव होगा. सीड का शेप में राउंड डोमिनेंट, रिंकल्ड रिसेसिव. नाउ सीड का कलर येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव. फिर पॉड की शेप, पॉड की कलर. पॉड की शेप में फुल डोमिनेंट, कंस्ट्रक्टेड रिसेसिव. पॉड का कलर जो होता है वो ग्रीन होगा डोमिनेंट एंड येलो रिसेसिव. फिर फ्लावर का कलर एंड पोजीशन. कलर येलो डोमिनेंट एंड वाइट रिसेसिव. एंड पोजीशन में एक्सियल वाज डोमिनेंट एंड टर्मिनल वाज रिसेसिव. नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टेम हाइट. टॉल वाज डोमिनेंट एंड डॉर्फ वाज रिसेसिव. सो ये चीज़ें थी. फिर इसमें एक आता है कि प्रीवियस ईयर में आया था कि मेंडल का जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो उसमें कौन से टाइप का पॉलिनेशन यूज़ किया था. तो ही हैज़ यूज्ड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. सो दिस कैन बी important question in your exam. So Mendel has conducted such artificial pollination or cross pollination experiment using a several true breeding pea line.
And Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as a pair which were similar except one with contrasting traits. Okay, and यहाँ पे 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे और 14 ट्रू ब्रीडिंग पीस थी और इनका पॉलिनेशन कैसा हुआ था, आर्टिफिशियल और क्रॉस. नाउ नेक्स्ट पेज, दैट इज़, ये तो 70 पेज नंबर 70 पे था सब. अभी पेज नंबर 71 पे इम्पोर्टेंट यही है कि ड्यूरिंग F1 जनरेशन में इन्होंने क्या किया था. During F1 generation, only one of the parental trait was expressed in F1 generation, and at F2 generation, both traits were expressed in a proportion of 3:1. And the contrasting traits did not show any blending at either F1 और F2 स्टेज. यानी कि इन्होंने बताया कि F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंटल ट्रेट जो होती है वो एक्सप्रेस्ड हुई और F2 जनरेशन में both traits were expressed in a ratio of 3:1. एंड इन्होंने ये भी बताया कि जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थी उन्होंने कोई ब्लेंडिंग नहीं की, ना ही F1 में और ना ही F2 जनरेशन में. एंड इन्होंने ये बताया फर्दर एक्सपेरिमेंट के बाद कि समथिंग इज़ देयर विच इज़ स्टेबली पास डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम अ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू gametes and over a successive generation. So he called these things as a factor. And now we call them genes. So genes therefore are the basis of inheritance. Remember this point, which is a unit of inheritance is genes. Genes are the unit of inheritance, and inheritance is basis of heredity. Further, the important line is that जो genes होते हैं, the genes which code for a pair of contrasting traits are called alleles, and that is they are slightly different form of same gene. यानी कि होते तो जीन सेम ही है बट वो उनका स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होता है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट फॉर्म करते हैं. सो alleles are the genes which code for a pair of contrasting trait and they are slightly different form of a same gene. And यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, जीनोटाइप फिनोटाइप. जीनोटाइप होते हैं जीन्स एंड फिनोटाइप इज़ द जो हमें बाहर से देखने को मिलता है. होमोलोगस मीन्स सेम टाइप ऑफ जीन्स, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. एंड एक होता है होमोजाइगस एंड एक होता है हेट्रोजाइगस. हेट्रोजाइगस में क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, जैसा भी है. allele can be similar in a case of homozygous and they can be different in case of heterozygous. And segregation of allele is a random process. So अगर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आता है तो यू शुड नो कि इट इज़ अ रैंडम प्रोसेस. Segregation of allele is a random process and there is a 50% of chance to containing either allele, and this was verified by the result of a crossing. Okay, so यहाँ पे हमने यूज़ किया था पुनेट स्क्वायर. पुनेट जो थे ये एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे और इनका नाम था रेजिनाल्ड सी पुनेट. And it was a graphical representation to calculate the probability of all the possible genotype of a offspring in genetic cross. So Punnett square किसके लिए यूज़ होता था, to calculate the probability of possible genotype. And जो मेंडल ने क्रॉस करवाया था उसमें यहाँ पे F1 जनरेशन एंड देन F2 जनरेशन में यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो था टॉल ऑर्डर ऑफ का 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1. एंड जो
वन है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और जो टू था वो था क्या, हेट्रोजाइगस यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी का। एंड F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप थी कैपिटल टी स्मॉल टी वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेटेड थी। नाउ इन पेज नंबर 74 द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज टेस्ट क्रॉस। सो व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप होता है उसे हम क्रॉस कर देते हैं रिसेसिव वन से, एंड इंस्टेड ऑफ दैट सेल्फ क्रॉस। सो मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 जनरेशन विद डार्क प्लांट। तो टेस्ट क्रॉस से क्या क्या आउटकम होता है, इससे हमें पता चलता है कि उसकी जीनोटाइप कैसी थी। Therefore, it is used to determine the genotype of a tall plant at F2 generation. And in page number 75, we have law of dominance. So, तीन law थे dominance के, and these three law was based on the observation of the experiment which was done by Mendel in a monohybrid cross. And there were three laws. So first law was law of dominance, and second law was law of segregation, and fourth law was based on dihybrid cross, which was law of independent assortment. And first law, which is law of dominance, according to which it is stated that first, character are controlled by discrete unit, which is called as factor, and second is these factor occur in pair, and third point is dissimilar pair of factor, one member of pair dominate and the other pair recessive. Okay, so law of dominance explain the expression of one of the parental character in monohybrid cross in F1 generation and the expression of both the character in F2 generation. It also explains the proportion of 3:1 obtained in F2 generation. And in law of segregation, the heterozygous allele, one produces two kind of gametes and each having one allele with equal proportion. Okay. And it also state that alleles do not show any blending, and that both the character are recovered as such in F2 generation through one of these are not seen in F1 generation. So there are two exceptions of law of segregation. First is incomplete dominance. So the example of incomplete dominance is dog flower, that is also known as snapdragon or antirrhinum species. So to understand the incomplete dominance, a cross between true breeding red flower, which is represented by capital R, and recessive one white flower, which is represented by small r. सो इसमें यह होता है कैपिटल आर जो रेड फ्लावर है उसमें से जो होमोजाइगस आर होते हैं, इसमें क्या होता है गैमेट इसका फॉर्म होगा आर, और जो वाइट फ्लावर होता है उसका स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या होता है कैपिटल आर स्मॉल आर एक हेट्रोजाइगस बनाता है जिसका कलर आता है पिंक। सो रेड एंड वाइट ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है जिसकी वजह से एक इंटरमीडिएट आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, यानी कि डोमिनेंस का एक्सप्लेनेशन। सो एवरी जीन has the information to express a particular trait that we know, and in diploid organism there are two copies of each gene that is known as pair of allele. Okay, and these two allele need not to be identical as in heterozygous में क्या होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हाइट का लेते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड when we assume a normal allele, so it will produce normal enzyme which will transform the
substrate into product. And in modified allele, there would be the three possible way of production. First is it will produce a normal or less efficient enzyme. Second, it will produce non-functional enzyme. Or third, it would not produce any enzyme at all. Okay, so these are the three things which can be happen in the case of a modified allele. Modified allele. And so let's assume a first case where the modified allele is equivalent to unmodified allele. In this case, it will produce same phenotype or trait and result in the transformation of the substrate. And such equivalent allele are very common. But if the allele produce a non-functional enzyme or no enzyme, then the phenotype may be affected, right? So the phenotype or trait may depend on the functioning of non-modified allele, and the unmodified or functioning allele will represent the original phenotype is the dominant, and modified allele is generally the recessive allele. Hence, the example which I am giving and which is there in ncert, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. Okay. So in this paragraph, the conclusion is that the unmodified allele will be the dominant allele, and the modified allele will be the recessive trait, will show recessive trait, and modified allele will show recessive trait, and unmodified allele will show dominant trait. Okay. Now the next exception of this, what we say, law of segregation is कोडोमिनेंस, वेयर कोडोमिनेंस में क्या होता है कि बोथ हलील्स क्या होते हैं, वो अपना ट्रेट शो करते हैं. ओके, सो कोडोमिनेंस का एग्जांपल एनसीईआरटी में ह्यूमन ब्लड ग्रुप का दिया गया है, एबीओ ब्लड ग्रुप, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द जीन आई. इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हैज़ अ शुगर पॉलीमर that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene. So यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आरबीसी की, उसमें क्या होता है, शुगर पॉलीमर होता है जो कि प्रोट्रूड होता है, यानी निकला होता है सरफेस से. और किस तरीके का शुगर होगा ये कंट्रोल होगी जीन आई से. एंड यहाँ पे तीन तरह की जीन आई होती है. फर्स्ट इज़ आई ए, सेकेंड इज़ आई बी, एंड थर्ड इज़ सिंपल स्मॉल आई. एंड स्मॉल आई जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता है कोई भी शुगर. एंड जो आई ए है और आई बी है वो शुगर प्रोड्यूस करते हैं, बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट इन फॉर्म. एंड आई ए एंड आई बी इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई. एंड मीन्स ये दोनों साथ में अगर आते हैं तो ये कोडोमिनेंस शो करेंगे. एंड in human RBC EBO blood grouping there are 6 different type of genotype. This could be asked in your examination, that how many types of genotype are there in human RBC human EBO blood grouping. So there are 6 different type of genotype, and 4 type of phenotype. 4 type कौन से होंगे? A blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. ब्लड ग्रुपिंग जो हमने पढ़ा वो कोडोमिनेंस तो शो करता ही है, अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो शो मल्टीपल अलीलिज्म, एंड दिस मल्टीपल अलील्स कैन बी फाउंड ओनली when population study is made. This is mentioned in ncert and I think this is a important topic, important point. And a single allele may produce more than one effect, and example of which is star synthesis in pea seed is controlled by one gene, and it produces more than one effect. So this is what we call, this is given in ncert. So pleiotropy is the term used for the genes which show a single gene which show more than one effect. So one more important line in it
in page number 78 that dominance is not autonomous feature of gene or the product that it has information for, and it depends much on the gene product and production of the particular phenotype.